Hi, everybody. I hope everybody is happy, safe, and healthy. I thought let us make a two-part episode where I am sharing my views on gratitude and forgiveness, what I have practiced, what has been learnt by me, what I already know and I cannot practice, and a little bit of difference of views from what I have experienced and what I have read worldwide. All this and a lot more on gratitude and forgiveness. Let me tell you before I begin, in this part 1 series, the quickest thing that I can cover is they are the most ancient and the most powerful mental tools there are if you know how to work with them. They are just not two qualities that a person should possess. They are not just some random things that you will stumble upon when you read some self help books, especially the good ones. And their brothers and sisters are surrender and peace, and even wisdom sometimes. So, with gratitude and forgiveness, obviously, surrender and wisdom and peace come along. I have already talked about uh, how surrender works in our lives in one of the podcasts. However, I could not connect and control and cover a lot of content about it. But जितना भी मैं cover कर पाई, I am really happy that I did. Let's get back to our topic. I will first talk about what I think forgiveness is and how much have I been able to inculcate the tool called forgiveness in my life. So, forgiveness is the willingness or allowing yourself that willingness to let go of some sort of unfair action that is performed to you, within you, by any external resource, and even sometimes within. That is the real implementation of letting go. Forgiveness. Forgiveness is really a power, a tool, if you ask me. Something so powerful that you should allow yourself enough hours of healing to reach to. I myself have not reached that level and limit in my mental healing where I suddenly decide that okay, I'm going to now forgive this person after years and years of facing injustice. I just can't. You know why? Because जो भूलते नहीं वो माफ करते नहीं. We've heard, right? Forgive and forget. एक तो ये बात होगी कि forgive and forget कैसे होगा यार. मतलब हम तो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं ना. हमारे साथ जो भी हुआ है वो क्या हम भूल पाएंगे? इनफैक्ट the more appropriate saying is learn from your experiences. A very nice saying that I just recently read comes to mind is that grow through what you go through. है ना? तो अगर ये सब चीज़ें करनी है तो हम फॉरगिव और फॉरगेट कैसे करेंगे? मतलब फॉरगिव करना या माफ़ कर देना इतनी बड़ी बात है, पता है. मतलब इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने महीनों तक आपके साथ जो भी ज़्यादती हुई ना, बस उसे माफ़ कर देना है. जो माफ़ करने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है. हमारे हिंदी में सेइंग है. बट ये भाई साहब इतनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, मैं बताऊं, सालों लग जाते हैं किसी को फॉरगिव करने में. खैर, I am still in the process to learn and practice forgiveness. However, I'll tell you why I am not stopping. मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप ट्राई कर रहे हो, फॉरगिव कर ही नहीं पा रहे हो, पीसफुल महसूस ही नहीं कर पा रहे हो.
मेरे केस में ऐसा है ना कि मैं उसका इम्पोर्टेंस समझ चुकी हूँ, फिर भी मैं उसको अच्छे से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज उसकी इम्पोर्टेंस को मुझे बार बार खुद को याद दिलाना है, और आपको भी यही करना है। अब मैं फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस समझाती हूँ, उसके बाद ना आप डिसाइड करो, यू डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू अलाउ दैट ब्यूटिफुल मेंटल पावर टू acquire within you, so that you take back all the control of your lives. Yes, if you really know how to use forgiveness as a tool, you can take back the power and the control of your lives, just like that, in a small snippet. Forgiveness really is an act of liberation. Now, this is not what I think, this is what I have read in a lot of books, in a lot of beautiful and very important books I have read. Forgiveness is an act of liberation. Whom? Of whom? Liberation of whom? Of yourself. Now, why do you want to liberate yourself? You want to liberate yourself from the clutches of those negativities that no longer serve you anymore. Those negativities happened with you because they wanted to teach you some lesson. Those negativities were opportunities for you to grow in this lifetime, which as a soul you all already decided, by the way. So forgiveness is that act of liberation. Now, having said that, you should always take your time to be able to convince yourself whether or not you want to participate in that act of liberation, or how much ready are you in order to allow yourself to act in that act of liberation. थोड़ा सा भारी हो गया। हमें ना खुद को तैयार करना है। कैसे और किसके लिए? हमें खुद को तैयार करना है ताकि हम पूरे दिलो दिमाग से होशो हवास में किसी को इस प्रकार माफ़ करें कि उस पर्टिकुलर एंटिटी की पावर हम पे इसके बाद कुछ उखाड़ ना ले। यस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। द फॉरगिवनेस इज़ नॉट कि उसने जो किया वो सही था या गलत था, या मेरे साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। उस चीज़ को जस्टिफाई करने का कोई तरीका है फॉरगिवनेस देना? नो। फॉरगिवनेस इज़ कि जो नेगेटिविटी उस इंसिडेंट से या उस एंटिटी से पनप रही है और जिस प्रकार का बखेड़ा खड़ा कर दिया है ना, उस बखेड़े को हमेशा के लिए ना बंद कर देना है। और उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, क्योंकि आपको पूरी जी जान लगा के मन से पूरी मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिविटी आपके साथ हुई है उसको निकालना है, और जो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जो भी जीवन का सार जो आपको सीखना था, बस वही सार रह जाए आपके साथ। बाकी सब अगर आप भूल भी जाए ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कैन आई टेल यू समथिंग वेरी 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 यूज़फुल ऑल्सो? एक बार आप समझ गए ना कि इसको कैसे, कि फॉरगिव कैसे करना है और फॉरगिवनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कैन आई टेल यू, यू विल नॉट हैव टू पुट एन एफर्ट टू फॉरगेट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सच में भूल जाओगे, अरे यार इतना तो क्या हो गया था कि मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती थी या रहता था। बिकॉज वो चीज़ आपको अफेक्ट करना ही छोड़ देगी। आपने उस चीज़ को माफ़ी तो कर दिया। कई बार होता है ना, सालों पहले हम कॉलेज में या हम स्कूल में थे, हमारे साथ कुछ हुआ, चीज़ तो हो गई, बस वो बंदा या बंदी या टीचर या वो इंसिडेंट या वो स्टैंडर्ड याद रह गया कि बस डिफ़िकल्ट बढ़ा गया था। बट एग्जैक्टली क्या हुआ था उन दिनों पता नहीं। हम परेशान क्यों रहते थे उन दिनों, याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि हमने उस चीज़ को कन्वीनियंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेट गो कर दिया है, क्योंकि हमने उस चीज़ को माफ़ कर दिया है। नॉट बिकॉज हमने डिसाइड किया उस चीज़ को माफ़ करना, बट बिकॉज मेरी ज़िंदगी में और बड़ी चीज़ें आई जिसके लिए मुझे इस चीज़ को लेट गो करना पड़ा, इसलिए मैंने उस चीज़ को माफ़ कर दिया। अब इसमें ट्विस्ट देखिए, आप अपने आप रियलाइज़ कर लेंगे कि आपने उस चीज़ को माफ़ कर दिया। सो बेसिकली कौन सी चीज़ का, कौन सी एंटिटी का आप पे कितना कंट्रोल, या वो एंटिटी आप पे कितनी हावी हो या ना हो,
उस चीज़ की पावर को डिसाइड करना ही फॉरगिवनेस है दोस्तों. यस, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सो एंड सो पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू control my life anymore, forgive them. Forgive them because they are acting out of their state of happiness or unhappiness and they are projecting that on you. That doesn't mean you have to respond them back in your projection. The minute you decide that you need to forgive them, you're instantly cutting that energetic cord with them of displaying any sort of power on you. And the minute you cut that cord, you are setting yourself free, you are liberating yourself. इतनी सारी चीज़ें पता होने के बावजूद ना फिर भी आई टेक टाइम, मैं खुद फिर भी आई एम टेकिंग टाइम टू फॉरगिव अ फ्यू पीपल इन माई लाइफ. एंड यू नो व्हाट, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट बिकॉज द डे आई एम completely in that zone where I forgive, I will really understand why they came into my life, why those incidents happened, and what was the actual lesson that the universe was trying to teach me through those instances and experiences. Because that is why I need to forgive them, so that I learn my lesson and I find my way to true peace. Whatever anybody has done with me is their karma, it is their journey, it is their decision. I am not supposed to be concerned about that. I am supposed to be concerned only about my peace. And that is why forgiving them is important, because I want to feel peaceful. This is something that I keep telling myself every day. And if you ask me, 60-70% तो पहुंच ही गई हूँ उस जगह पे मैं. However, gratitude has helped me even more. And the results of gratitude are even so much bigger for me. Let's talk about those results in my next podcast. Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.